We will discuss about the uncountable sets. The definition of uncountable set is that a set which is not countable, which is not enumerable or denumerable is called the uncountable set. What is enumerable, denumerable? Enumerable, denumerable are those sets which have one-to-one correspondency with the set of natural number. Examples of uncountable sets are set of real numbers, intervals, etc. Now, theorem 2.4.2. Prove that the open interval 0, 1 is uncountable. We prove this theorem by contradiction. Suppose this interval be a countable set. It means it have one-to-one correspondency with the set of natural number. It means 0, 1 can be written in the form of a sequence a1, a2, an, a3 and so on. Expand each an in the form of an infinite decimal such that a1 equal to point b11, b12, b13, so on and b1n. In a similar way, a2 and so on and an, where bs may have any integral value from 0 to 9. In representing the elements by decimal, we avoid the infinite chain of 9s. For example, we write 1 y2 as 0.500 and so on, not as 0.4999. In this way, we guarantee that each element in this open interval has a unique representation of decimal. Now we come to page 2nd. Now we take a number which is different from this sequence and we take from open interval 0, 1. This is a equal to point b1, b2, b3 and so on and bn and so on, where each bs is an integer from 0 to 8. Previously we taken that 0 to 9, and in this representation b1 equal to not b11, b2 equal to not b22, b3 equal to not b33 and so on, and bn equal to not bnn. The above construction shows that the number a is different from the numbers which are taken in the sequence, but it belongs to open interval. This is a contradiction, which is a contradiction of the assumption, and hence this open interval is uncountable set. Now next theorem 2.4.3. Now in this theorem we will prove that the closed interval 0, 1 is uncountable. Approach is different from previous theorem. Let it possible A is countable set. Then the points of this set can be arranged in a sequence x1, x2, x3 and xn and so on. Now our assumption is every point of A occurs in the sequence 1. Now divide A into 3 equal parts by means of a points 1 y3 and 2 y3. Now it is clear that the x1 cannot belong to all three subintervals 0, 1 y3, 1 y3, 2 y3, 2 y3, 1. Now go to pages 3, and at least one of these subintervals fails to contain x1. Let us say this is a1, and divide a1 again into 3 equal parts, and again one of these intervals, at least one of these intervals fails to contain x2. It is represented by a2, and in a similar way we get a nested sequence, infinite sequence of nested intervals such that a1 contain a2, a2 contain a3, a3 contain a4 and so on, which possesses the property that xn does not belongs to an. And since the length of
the interval an is 3 की power minus n and this tend to 0 as n tend to infinity. Then by a known limit theorem, Cantor's intersection theorem, there exists one point belonging to all these intervals. Suppose this is point eta belongs to n for all n. It means n will belong to a set A which is countable, and thus we get eta belongs to n, but xn does not belongs to n, therefore eta equal to not xn, but both the points belongs to the sequence which I have taken previous, which is a contradiction. Therefore the closed interval is uncountable set. Now we can go to next page, page number 4. Theorem 2.48. In a similar way, the extra theorem 2.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, you will prove them yourself with the help of textbook. Theorem 2.4.8, prove that the set of real number R is uncountable. Now the previous theorem proof होने के बाद सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, इसे प्रूव करना और आसान हो जाएगा. इसे भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं. लेट अस पॉसिबल सेट ऑफ रियल नंबर इज काउंटेबल सेट. लेकिन हम प्रीवियस पहले प्रूव कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल और ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर. और आप काउंटेबल सेट में दो थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट. और नेक्स्ट रिजल्ट, ए सेट इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स डेनोमरेबल सबसेट. इसका मतलब जो ओपन इंटरवल है वे क्या है, काउंटेबल है, लेकिन हम उसे अनकाउंटेबल प्रूफ कर चुके हैं. तो इट मीन्स दैट इट इज़ द कंट्राडिक्शन ऑफ द एज्यूम्शन. देयरफॉर set of real number is uncountable. Now corollary 2.4.10, prove that the set of irrational number is uncountable. To prove this, continue page number 5. इसके प्रूफ में let q be the set of rational number और complement of q in R be the set of irrational number. इन दोनों की यूनियन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर. और हम जानते हैं कि दोनों जब हम काउंटेबल सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हम काउंटेबल लेकर चले हैं और क्यू भी काउंटेबल सेट है, दोनों की यूनियन काउंटेबल होनी चाहिए. और दोनों की यूनियन किसके बराबर होती है, सेट ऑफ रियल नंबर के. इसका मतलब ये हो गया कि आर तो अनकाउंटेबल होता है, इनकी यूनियन अनकाउंटेबल होगी. ये कंट्राडिक्शन प्राप्त होता है एज्यूम्शन का हमारी. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है वह अनकाउंटेबल है. अब नेक्स्ट थ्योरम है 2.4.11. इसमें हम प्रूव करेंगे दी सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल. इसे भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. हमने इसे ए से डिनोट किया, ए बी दी सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, और इसे काउंटेबल मान के चले. दूसरा नंबर है बी दी सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर. हम जानते हैं कि ये सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल. अब हमने जो है ए बी दी सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर भी काउंटेबल लेकर चले, तो इनका यूनियन क्या होना चाहिए, काउंटेबल हो गया. तो ए यूनियन बी इज काउंटेबल. लेकिन ये तो रियल नंबर के बराबर होता है. ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर विच इज अनकाउंटेबल. दिस इज देयरफॉर विच इज ए कंट्राडिक्शन. हैंस सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसेंडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल.